Hello, are you there? Yes, sir. Yes, good evening. So, voice is audible, clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, let me to introduce myself. I am Tirupati Naik, and so I am a trainer and director of Parametric Solution. Since last 20 years, I am in this field for training of CAD, CAM, CNC. So, that's about and around 15,000 students I have trained as of now. Other than that, we provide the training like computer basic courses like MS Office, DTP, Tally, okay, for to have the various faculties and team. Then HVAC, heating, ventilation, air conditioning, designing courses, and then we have like MEP, mechanical, HVAC, electrical designing, and then plumbing designing, firefighting designing. So all this kind of training program we provide. Parametric solution is ISO 9000 certified company, and also like we provide the training at various engineering colleges with like a seminar, or else we conduct the training program. I had worked with various companies like the particular component which is supplied to Telco, Mahindra, Bharat Forge, Cinemiro Engineering Limited, Trinity Engineering Limited, then Siemens, all these kind of, like I have worked around 6 years as a production engineer, quality engineer, design engineer. After that, in 2002, I started training industry, and so since then, I have not looked back. So continuously, I'm providing training from Thane, Mumbai. So that's about me. Anything you want to ask questions about me? I want to know more about. No, sir. So yes, anything? No, sir. Okay, so just briefly introduce yourself, what you do, and which location you are from India, and so what is the purpose of joining this course? Sir, I am Sumati Badok. I am from West Bengal, and I worked in a company before, but there they needed a CNC programmer for growth. So I am here to learn this course. Subdeep. Okay. And so there is a company you left, and then there is a requirement for CNC. So for the future growth, you started joining this course. Okay. Yeah. That's you took a very good decision joining at Parametric. So you will be fulfilled all your expectations from me about like being expert in CNC. Which course you joined, Lathe or VMC? Which one? Lathe. Lathe programming. Okay. So you will be going through the various training program on Lathe program. Okay. So Lathe is one of the best training and education. So like in the Lathe CNC, Lathe also we call it as a turning center. Okay, turning center. Okay, Lathe turning. So you will be getting all the solutions from the Lathe turning center for various operations. Let's we're going to see the basic introduction of NC. What is NC? Do you know what is NC? No, sir. N for numerical, C for control. That is called a numerical control. N for numerical, C for control. John Parson, the person who is in 1942 or 1941 near about, during the Second World War. During the Second World War. So this guy who developed the various like machines, okay, which is called a manual machines. Okay. So John Parson in 1941, during the Second World War, he started developing a certain machines. Okay, in 1941, and he was working with MIT, and then later on he working with Air Force, FORCE, Air Force, USA. While working with the Air Force and then MIT, he developed
the manual machines. That manual machine is called a lathe turning. Okay, in 1952 he developed. After 10 years of working on manual machines, then it became a lathe machine he found. L-A-T-H-E, lathe machines. So numerical control also we call it as a conventional machine. We call it as a conventional machines. Conventional machines. Also we call it as manual machines. Manual machine, you might be seeing the lathe operating machine manual. Then for example is lathe machine. Then pantograph VMC machine, vertical machining center VMC machine. Again. So pantograph VMC milling machine, we call it as a milling machine. So these all machines would be used manually for creating raw material to finished parts, from the raw material to finished parts. Like any kind of raw material, like in rectangular box or else any cylindrical rod, that would be converted into as per the drawing given a finished part by doing the turning operation on lathe machine. On milling machine, like a flat parts, like free form surfaces, like you might be having in front of, there is a mouse. So mouse kind of the shape will be done on the VMC machine. If it is like a remote, okay, so remote, you can see this remote, okay, so this kind of shape will be done on the vertical machining center. If it is like a marker, it is a cylindrical job, okay, so this will be done with the lathe machine, like it's a die and all. So round shape, like a shaft, connecting rod or hub, this kind of job would be done on lathe machines. Like a step turning, then like a OD turning, ID. OD means outer diameter operation, then internal diameter operations, then step turning, face turning, and grooving, threading operation, drilling operation. These are the operations to be done on the lathe machine. On VMC machine, like a face milling, profile milling, counter milling, pocketing, die and core and cavity part, like a die, core and cavity, die making, kind of things to be done on the milling machines. Like other machines are available in the market are like a shaping machine. So for creating an keyway shaping machine, then slotting machine. For slotting also it is for creating an like a keyway kind of things, slotting or creating a slots, slotting machine. Then hobbing machine. You might be seeing the gear cutting machines are hobbing machines. Hello. And then, can you hear me? Hello. If it is not audible, you can send me the chat box. I think your internet connection is unstable. Yes, sir. In between, is there a network disconnected? Yes, sir. But is it audible from my side? Whatever I'm speaking, are you getting? Yes, sir. Yes, sir. Okay, whatever I'm written on the screen. Yes. Okay, which language is What? comfortable for you? English or Hindi or Marathi or which language? कौन सा भाषा? in Hindi. हिंदी बराबर समझ में आएगा ना आपको? ओके, तो फिर ठीक है, तो आप बताना है, क्योंकि आपको नहीं समझा तो आगे से बोलने का, ठीक है, आपको नहीं समझा तो पूछना है, क्योंकि सीएनसी कोर्स में जो है आपको सारा डिटेल में समझने के लिए लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. लैंग्वेज बैरियर रहा तो नहीं समझ पाओगे. सो अभी तक मैंने जो बताया आपको न्यूमेरिकल कंट्रोल एक मैनुअल मशीन है जो जॉन पार्सन ने 1941 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो मशीन्स को डेवलप करने के लिए जो है लाइक लेथ मशीन को डेवलप किया. अराउंड 10 साल लिया उसने और मशीन बनाते हुए, और 1952 में लेथ मशीन को जो है पब्लिश किया. एंड सिंस देन लाइक अराउंड 30 to 35 years जो है लेथ मशीन पे, मिलिंग मशीन या स्लॉटिंग, ये सब मैनुअल मशीन के ऊपर जो है वर्कशॉप में
काम करने का, और रॉ मटेरियल से फिनिशिंग पार्ट कन्वर्ट करने के लिए। उसके बाद 1981 के बाद जो है इंडस्ट्री में जो आया, दैट इज द आईटी, कंप्यूटर जो है, पर्सनल कंप्यूटर जो है ना इंडस्ट्री में आया। दैट इज आईबीएम कंपनी, देन माइक्रोसॉफ्ट, ये सभी कंपनी जो है कंप्यूटर को लॉन्च किया इंडस्ट्री में। तो जब कंप्यूटर आ गया तो फिर कंप्यूटर जो है सीएनसी मशीन को कनेक्ट करने के बाद, ओके, देन लाइक 1981 या 82 के बाद जो है पर्सनल कंप्यूटर आया। पीसी मतलब क्या? पर्सनल कंप्यूटर। पर्सनल कंप्यूटर। तो पर्सनल कंप्यूटर जो है लॉन्च किया गया। उसके बाद जो है सीएनसी और एनसी मशीन बिकम एंड सीएनसी हो गया है। तो इसका मतलब क्या है कि 1981 के बाद जो है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सो 1981 के बाद कंप्यूटर आ गया। तो उसके बाद मोस्ट ऑफ मैनुअल जो मशीन्स हैं, लाइक लेथ मशीन, मिलिंग मशीन, शेपिंग मशीन, स्लॉटिंग मशीन, हॉबिंग मशीन, ओके, देयर आर मेनी अदर लाइक ब्रोचिंग मशीन, ऐसे इंडस्ट्री में वर्कशॉप में देखने को मिलेगा। ये सब जो है ना मैनुअल मशीन जो है कंप्यूटराइज्ड हो गया। तो कंप्यूटराइज्ड हो गया तो इसके लिए जो एक लैंग्वेज है वो सीखना पड़ेगा। दैट लैंग्वेज इज कॉल्ड G&M कोड। G&M कोड आ गया तो आप कोई भी सीएनसी के लिए प्रोग्राम लिख सकते हो। तो ये जो अगला 1 महीने में आप सीएनसी प्रोग्रामिंग एक्सपर्ट हो जाओगे। तो हाउ टू राइट द प्रोग्राम फॉर सीएनसी। तो उसके लिए पहला आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम्स आना चाहिए। कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है वो आगे देखेंगे। कोऑर्डिनेट सिस्टम आना चाहिए। उसके बाद ड्राइंग रीडिंग आना चाहिए। ड्राइंग को स्टडी कैसा करना है, ड्राइंग को रीडिंग द ड्राइंग, दैट इज लाइक ड्राइंग्स आर लाइक ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग, that is 2D drawings, then that is called two-dimensional drawings, then isometric drawings, that is called a 3D। तो ये ड्राइंग से आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरह से ड्राइंग रीडिंग से जो है ना आप प्रोग्रामिंग लिख पाओगे। ड्राइंग नहीं स्टडी करने आता है तो फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं निकालने आएगा। कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं निकालोगे तो जी कोड एम कोड जो है प्रोग्राम नहीं लिख पाओगे। Yes, so that's very important. So we'll be learning about how to read the drawing along with the drawing, and then coordinate system कैसे निकालना है। कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम है और ये दोनों टाइप आपको सिखाऊंगा। वन इज एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एंड इंक्रीमेंटल कोऑर्डिनेट सिस्टम, incremental coordinate system। ये दोनों टाइप सीखेंगे आगे। So coordinate system में then we're going to learning about the various type of different parts of the CNC machines। So parts of CNC machine, then various tool holders, like tool holders के बारे में मालूम रहना चाहिए, like OD tool holder या boring bar, grooving का tool holder, threading का tool holder, ठीक है। So for lathe turning center के लिए। Then insert के बारे में, insert is like it's a cutter, like a single pointed cutter which used for to remove the material, which is like a carbon cementide like material और else ceramic का जो insert है। So different material का बना हुआ रहता है, ceramic या either carbon cementide, okay। Then other like HSS material का भी रहता है, like drilling जो drill bit रहता है वो HSS material, high speed steel material, okay। Some hardened material, glass को cut करना है तो then diamond का material, diamond, okay। So that insert which is like having like a golden color जैसा दिखेगा ना, so वो carbon cementite का।
तो इंसर्ट में भी अलग अलग टाइप्स रहते हैं, लाइक CNMG, then VBMT, CCMT. There are various insert named. Okay, then we can going to see the what is C, what is N, what is M, what is G, all this thing during the topic. We're going to learn all that. Even though like tool holder में भी जो है ना उसका नाम रहता है, that is PCNLR, PCNLR. Okay, that is the type of clamping, and then type उसका clearance angle, then which side the material to be removed, left side or right side. Okay, and then shank size 25 by 25 ऐसा कुछ रहेगा. If it is diametrical रहा तो डाया 25 करके रहेगा. स्क्वायर टाइप का जो है ना शांक रहा तो 25 by 25 रहेगा. देन R 0.8 रहा तो उसको 0.8 करके रहेगा. दैट इज द नोज रेडियस इंसर्ट का. तो ये सारा जो है ना टूल होल्डर का इस तरह से नाम रहता है. सो which is easy to identify that which tool you are going to using for different operations on the CNC machine. तो ये सब जो है ना आपको प्रॉपरली टूल होल्डर के बारे में, इंसर्ट के बारे में, पार्ट्स ऑफ CNC मशीन के बारे में. देन आई विल बी कवरिंग अबाउट द वेरियस लाइक स्पीड of the CNC machine while operation, then feed. Okay, then cycle time, how to calculate the cycle time. Yeah, machine time, what is called as machine time. Okay, okay, cycle time, machine time for production. So you need to understand the cycle time, how to remove the how to calculate the cycle time, that is also going to cover. And we're going to cover like what is the formula for speed. That is cutting speed is equal to pi dn by 1000. So cutting speed is equal to that is cutting speed equal to pi dn. So the symbol is pi dn is inverted like a pi dn divided by 1000. Okay, so pi is like circumferences radius जो रहेगा या complete diametrically वो calculate करने के लिए हम pi उसका जो constant value जो रहेगा 3.14. D is the diameter of the tool holder, and then N is a speed. Okay, so N it denotes like a S also, like N also like a S speed. So ये पैरामीटर्स आपको ड्राइंग में मेंशन किया हुआ रहता है, डायमीटर दिया हुआ रहता है, स्पीड नहीं दिया रहता है. तो आपको कैलकुलेट करना है स्पीड को. कटिंग स्पीड आपको सपोज दे दिया है, कटिंग स्पीड PC. कटिंग स्पीड सपोज आपको 35 mm per minute ऐसा कुछ दिया है, 30 okay mm per minute. Then diameter, suppose diameter आपको around 25 diameter in mm दिया है सब. Then pi is that is 3.14. ठीक है, इससे आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, n कैलकुलेट कर सकते हैं as per the given formula. Similarly speed, then feed. feed कैलकुलेट कैसा करना है, तो feed is like f small f into n. ठीक है, so for that is a unit is mm per minute, that is the feed. Similarly cycle time कैलकुलेट करना है, तो cycle time के लिए जो है length into number of times, that is I, and divided by feed, that is small f into n. तो आपको साइकिल टाइम मिलेगा, ये सेकंड में आपको कैलकुलेट करना है, यूनिट इज सेकंड में रहेगा. ठीक है, तो ये भी एक टॉपिक है, फीड, स्पीड, साइकिल टाइम, ये सब कैसे करना है वो सब देखेंगे, हाउ टू कैलकुलेट इट. ये तो सब जो है ना थियोरेटिकल पार्ट हो गया. ठीक है, सो दिस ऑल पार्ट वी विल गोइंग टू लर्न इन नेक्स्ट 1 week of time, and after that we're going to learn coordinate system. Okay, so that is absolute coordinate system, incremental coordinate system, how to calculate, how to find out the as per the given drawing for lathe machine. Okay,
and then G code, M code. ठीक है, G is for a proprietary code, M is a miscellaneous code. उसके बारे में हम सीखने वाले हैं. Any questions as of now from whatever I covered? Yeah. No sir. इसमें कुछ आपको क्वेश्चन पूछना है? No sir, clear. Okay. Let's, I want to share the screen, PowerPoint presentation. Wait for some time. Can you see this? Okay. Yes sir. The PowerPoint presentation. Okay, so Parametric Solution Private Limited, CNC Programming, myself Tirupati, Naik. Okay, so Managing Director, Trainer, Life and Business Coach. So CNC Programming, it will looks like this, the entire the block diagram of CNC machine. Here is this particular, this is the spindle and there is a check. यहाँ पे जो दिख रहा है, this is ये जो portion है back side का, that is, this portion is a spindle over here, and machine 00 यहाँ पे रहेगा, that is a machine 0. Machine 0 is by default, it will be set during the machine switch on. जब मशीन ऑन करते हैं उस समय में बूटिंग होगा और उसका रेफरेंस ले लेगा, और इसको बोलते हैं मशीन 0 रेफरेंस सेटिंग. ये मशीन जब स्टार्ट करते हैं तो ये ले लेते हैं. उसके स्पिंडल के सामने जो है ये पोर्शन को चेक बोलते हैं, चेक 3 सेल्फ सेंटरिंग चेक, जो इससे जॉब को होल्ड पकड़ते हैं उसके लिए यूज करते हैं. सो और उसके सामने एक जो है ना जॉ रहता है, JAW जॉ. जॉ इज लाइक अ वेरी सॉफ्ट मटेरियल का रहेगा. जॉ विल बी लुक्स लाइक दिस. ठीक है, तो ये चेक जैसे जो है होल्ड करेंगे चेक, तो ये जो है पोर्शन मुझे जॉ ओरिंग से जो है ना एग्जैक्टली मुझे सेंटर जो है ना, यहाँ पे हम एक जॉब को होल्ड करने के लिए बिटवीन सेंटर जो है ना प्रॉपर होल्ड करने के लिए सिलेंड्रिकल जॉब, अनइवन टाइप या एक्सेंट्रिसिटी जैसा नहीं होना चाहिए. एग्जैक्टली बिटवीन सेंटर में जॉब को पकड़ने के लिए जॉ ओरिंग करना पड़ता है. चेक जो है ना वेरी हार्डन मटेरियल रहता है, चेक को हम जॉ ओरिंग नहीं कर सकते हैं. जॉ ओरिंग मतलब क्या होता है, टूल से जो है धीरे से लाके जो है ना यहाँ से थोड़ा सा कट करके लेना है सिलेंड्रिकल एक टर्न सारा, ताकि क्या हो जाएगा, सो अंदर का जो आईडी पोर्शन है वो सर्कुलर में हो जाएगा. तो उससे क्या होगा कि ये वर्कपीस जो रहेगा सिलेंड्रिकल इसके अंदर फिट कर सकते हैं प्रॉपरली. तो वो है जॉ इधर रहेगा. देन वर्कपीस यहाँ पे फिट होगा एज पर लाइक जेड एक्सिस जो दिख रहा है, वो जेड एक्सिस इज दिस इज हॉरिजॉन्टल जेड एक्सिस. फ्रॉम दिस ओरिजिन सेंटर जो पॉइंट रहेगा वर्कपीस का, उसके आगे का जो है ना प्लस रहेगा और लेफ्ट साइड में माइनस रहेगा. और डायमीटर, दिस पर्टिकुलर जॉब जो रहेगा उसका डायमीटर एक्स एक्सिस की तरफ रहेगा, दैट इज वर्टिकल क्रॉस. इसको क्रॉस फीड बोल सकते हैं. सो दिस इज क्रॉस फीड एंड दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल फीड. और ये साइड में जो दिख रहा है इसको बोलते हैं टरेट, TURRET, टरेट. दिस इज एन टरेट. ठीक है, सो यहाँ पे एक्स एक्सिस दिख रहा है और यहाँ पे जेड एक्सिस दिख रहा है. So that is the x, this is x axis, this is z axis. Okay, लेथ में जो है दो ही एक्सिस रहता है, एक तो x axis and z axis. आप जब भी लिखेंगे तो पहला जो वैल्यू रहेगा दैट इज डायमेंशन में x का रहेगा, बाद में z का लिखना है, बीच में y नहीं रहेगा. y जो है ना मिलिंग मशीन में आता है x y z. ठीक है, तो लेथ मशीन में दो ही एक्सिस रहेगा, दैट इज 2 एक्सिस, दैट इज x and z. नॉर्मली आपने बहुत सारा जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्सिस वो देखा रहेगा. वो कैसा रहता है कि हॉरिजॉन्टल दैट इज लॉन्गिट्यूडनल फीड एंड वर्टिकल फीड. तो हॉरिजॉन्टल जो रहेगा हम उसको डायरेक्टली क्या करते हैं एक्स एक्सिस दिखाते हैं, और वर्टिकल जो रहेगा उसको वाई एक्सिस दिखाते हैं. हम जब भी ग्राफ बनाते हैं तो एक्स एंड वाई ऐसा दिखाते हैं. बट लेथ मशीन में इस तरह से नहीं रहेगा. लेथ मशीन में x axis become z axis and y axis become x axis.
Yes, sir. एंड एक्स एक्सिस जो रहेगा वो डायमीट्रिकली रहेगा, नॉट इन रेडियस। आपको रेडियस में डायमेंशन दिया है तो उसको डायमीटर के लेना है। डायमीटर एंड रेडियस में क्या फर्क है? डायमीटर एंड रेडियस में क्या फर्क है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस, डू यू नो? Yes, sir. ओके, तो देखो कोई भी सर्कल रहेगा ना 360 डिग्री जो है ना, सॉरी 360 में जो सर्कल बनाते हैं, ये जो है एक्सिस रहेगा। देखो सेंटर पॉइंट से यहाँ तक हम डायमेंशन जो लिखते हैं तो उसको बोलते हैं रेडियस। Yes. एंड सपोज सेंटर पॉइंट से कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक रहेगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक, तो इसको क्या बोलते हैं? डायमीटर। डाया मतलब क्या? कुल एक सर्कल का जो डायमीटर है अदर एंड टू द अदर एंड, तो उसको डायमीटर बोलते हैं। सेंटर टू जो सर्कल है वहां तक हाफ रहेगा तो उसको रेडियस बोलते हैं। Radius. तो टू आर का मतलब क्या है? इट इज द डायमीटर। मतलब ये एक आर है और ये साइड का आर, तो दो आर मिलाएंगे तो क्या होगा? डायमीटर होगा। तो आपको एक्स एक्सिस में ऑलवेज द डायमीटर में देना है, डायमीटर रहेगा एक्स एक्सिस। सपोज यहाँ पे 2 mm है, इधर 2 mm, तो आपको डाया मतलब एक्स एक्सिस में 4 लिखना है। सपोज आपको इस तरह से ऐसा रहा जॉब, और ये 0 0 यहाँ पे है, दैट इज अ 0 0, तो 0 से क्या है? 2 mm है, तो एक्स एक्सिस में जो है 2 mm नहीं लिखना है, x2 लिखेंगे तो आपका जॉब है 4. इतना इतना बनेगा, फिर मतलब 2 mm का बनेगा शाफ्ट। समझ रहे हैं? Yes, sir. देखो जेड जेड डायरेक्शन में तो क्या है? लेंथ रहता है डायरेक्टली 1 mm है तो 1 mm प्लस में रहेगा या माइनस रहेगा, टूल उसके हिसाब से मूव होगा। बट एक्स एक्सिस में जो है आपको 4 mm का डायमीटर का बनाना है, तो रेडियल जो है ना 2 mm रहेगा। ठीक है, दिस रेडियस इज 2 mm, ये साइड में 2 mm, 0 से नीचे, तो 4 mm होगा। ठीक है, तो डायमीट्रिकली एक्स में जो है ना डायमीटर में ही देना, ये इतना ध्यान रखो। आगे हम और एग्जांपल देखेंगे, कोऑर्डिनेट निकालेंगे तब और आपको समझ में आएगा। बट एट दिस मोमेंट अंडरस्टैंड दैट एक्स इज ऑलवेज डायमीटर एंड जेड एक्सिस इज द लॉन्गिट्यूडनल। सो सेंटर पॉइंट से जो है ना ये साइड में बाहर की तरफ जो है ना प्लस रहेगा, और ये सेंटर एक्सिस से ये साइड में जो है माइनस रहेगा। और Right side. सेंटर पॉइंट से ऊपर की तरफ जो है प्लस एक्स एक्सिस रहेगा बट इट इज डायमेट्रिकल, और नीचे की तरफ माइनस रहेगा। बट एक्स एक्सिस में हम 0 से नीचे टूल लेके जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेंड्रिकल रहता है ना जॉब। तो जब आप सिलेंड्रिकल जॉब रहा ऐसा सिलेंड्रिकल, तो मैं यहाँ से आधा कट करूंगा तो क्या होगा? ये जॉब रोटेट हो रहा है ना, ऐसा रोटेट हो रहा है तो क्या होगा? आधा लेगा तो ऐसा रोटेट होने से क्या होगा? सिलेंड सर्कल में कट हो गया। इसलिए जो है ना 0 से नीचे टूल लेके जाने की जरूरत नहीं है एक्स में। ठीक है, एक्स में क्या? सेंटर एक्सिस तक, सेंटर एक्सिस तक कट किया तो क्या होगा? और ये जॉब ऐसा ऐसा रोटेट हो रहा है, रोटेट होने से क्या होगा कि सारा फेसिंग में कट होगा, मतलब सारा फेस कट हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल इस तरह से सिलेंड्रिकल जॉब है, उसका सेंटर एक्सिस यहाँ तक है, तो मैं टूल जो है इधर से लेके आऊंगा, ये टूल को इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक कट किया, यहाँ तक, दैट इज दिस इज द 0। तो ये जॉब जो है ना रोटेट हो रहा है ना, तो रोटेट होगा तो क्या होगा? Yes. तो ये पोर्शन भी कट हो गया ना, Surface cut. फेस। हाँ, तो इसीलिए Yes, क्या yes. है, हम डायमीटर में देते हैं एक्स में। जेड एक्सिस में जितना लेंथ कट करना है उतना ही देना है, डबल नहीं करना है। यस, जेड एक्सिस इज एग्जैक्ट वैल्यू यू हैव टू गिव, इन एक्स एक्सिस यू हैव टू गिव द डायमीटर, दैट यू हैव टू रिमेंबर। सो दैट्स अबाउट दिस स्लाइड। ओके, ये स्लाइड में एनी डाउट, एनी क्वेश्चंस फ्रॉम द सीएनसी प्रोग्रामिंग हियर? No, sir. It is Yes. 4:40. So after 5 minutes we're going to end the session. तो आज जितना हुआ है उतना जो है ना आपको प्रिपरेशन करना है अगला क्लास तक का। और आपको पीडीएफ फाइल का जो है ना आज जो मैंने बताया उसका पीडीएफ फाइल का नोट्स भेजूंगा मैं आपको, उसको गो थ्रू करना है। Okay.
सो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम बताया था मैंने. So one is absolute coordinate system, another one is this is absolute coordinate system and a incremental coordinate system. And absolute coordinate system में जो है यहाँ पे ये पॉइंट है 0 0, ठीक है, और यहाँ से x, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है. तो ये जो है ना z एक्सिस है और ये x एक्सिस है डायमेट्रिकली, और ये पोर्शन में जो भी डायमेंशन लिखना है हमको, तो x प्लस में लिखना है, z प्लस में लिखना है, इस पोर्शन में आएगा. तो ये पोर्शन में टूल यहाँ पे कहीं पे भी आता है, तो अकॉर्डिंग टू दैट, सपोज ये जो है ना टूल मेरा 2 mm और इधर से 1 mm है, मेरा पॉइंट इधर रहा, तो क्या होगा, x 1 है ना, तो मतलब 2 लिखना है डायमेट्रिकली, एंड z जो है ना 2 mm लिखना है. 1 नहीं, यहाँ पे है ना 2 पे है ना, ये 2 ये z प्लस इधर है, ये z एक्सिस है, तो z 2 हो गया, और x में क्या है, 1 है, x में क्या है, ये 1 है, और z में यहाँ पे ये जो है ना 2 mm. तो x में क्या लिखना है, 2 mm लिखना है. 2 क्यों लिखा, बिकॉज इट्स अ डायमेट्रिकल. तो ये डिस्टेंस ये लिखना है. सपोज आपने यहाँ पे 1 mm ही देंगे तो क्या होगा, इधर से 0.5 इधर से 0.5, कितना कट होगा फिर. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस है, और सपोज प्लस नहीं लिखा इधर तो भी वो प्लस, ठीक है. सेकेंड क्वाड्रेंट में देखो, ये जो है एक्स एक्सिस प्लस है और जेड में माइनस, दैट इज द सेकेंड क्वाड्रेंट. सपोज मेरा पॉइंट यहाँ पे रहा, दैट इज दिस पॉइंट, एंड ये साउंड कम हो रहा है. अभी आ रहा है आवाज क्लियर? यस सर. तो यहाँ पे ये तो सेकंड, ये जो पॉइंट है, जो x में देखो 2 mm है, तो मतलब क्या लिखना है यहाँ पे, x में 4, x में गुड, यहाँ पे 4 लिखना है, और स्पेस, एंड z में जो है -2 mm, -2. इस तरह से z -2 ऐसा लिखना है, ऐसा नहीं लिखना है कि -z2, ये रॉन्ग, ठीक है. जो यहाँ पे प्लस रहा तो प्लस, माइनस रहा तो माइनस. प्लस रहा तो लिखने की जरूरत नहीं, प्लस सिंबल, प्लस नहीं लिखा तो भी वो प्लस, बट माइनस रहा तो इट इज माइनस. दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया, और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट. तो हम जो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखते समय पे लेथ मशीन में हम ऊपर के पार्ट, ये पार्ट में जो कोऑर्डिनेट आता है वही लिखते हैं. तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में. थर्ड में एंड फोर्थ में, दिस इज थर्ड एंड फोर्थ में नहीं लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे टूल जो है ना ये साइड में आएगा नीचे की तरफ, तो क्या होगा, वो राइट होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक कट करेगा, वापस अभी नीचे लेने की जरूरत नहीं, ठीक है. और जेड में जो है ये एक ही डायरेक्शन में ये साइड में जाने वाला, ठीक है. तो और सपोज वीएमसी मशीन में रहा तो चारों क्वाड्रेंट में टूल मूव हो सकता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में, बिकॉज इट इज अ फ्लैट डाई के लिए. बट लेथ टर्निंग में क्या सिलेंड्रिकल जॉब रहता है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में टूल मूव होगा.